कॉर्पोरेट कनेक्शन की और आज बात होने वाली है क्वेस कॉर्प के मैनेजमेंट से। हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ रवि विश्वनाथ जी, जिनसे बातचीत होगी ऑलसेक टेक के साथ कंपनी का जो मर्जर हुआ है उसके बारे में। क्वेस कॉर्प की ही सब्सिडरी कंपनी है ये, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। क्वेस कॉर्प की शुरुआत हुई थी साल 2007 में। स्टाफ आउटसोर्सिंग सर्विस का बिजनेस ये करते हैं। ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस, वर्कफोर्स मैनेजमेंट का भी कारोबार है। कंपनी के पास करीब 3000 क्लाइंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, एपैक और मिडिल ईस्ट में भी इनकी मौजूदगी है। मिस्टर विश्वनाथ, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले ये जो आप मर्जर करने वाले हैं इसी की कुछ डिटेल्स जानना चाहेंगे। क्या रैशनल रहा इस मर्जर के पीछे और किस तरह की सिनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मर्जर के बाद? राशनल था ये भी। क्वेस की शेयर होल्डिंग वाज ऑलमोस्ट क्लोज 74% ऑलसेक में, एंड देयर वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फ्रॉम द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की एक साथ to merge Allsec into Quess. That has been a long-standing demand for some time now. That apart, I think हमारी जो teams है अलग अलग से काम कर रहे थे इतने दिन। the integration हुआ था। जब ये integration was halfway through the integration, ये COVID की जो we had the first wave and the second wave, etc. But over the last 6 months, over the last 6 to 9 months, the integration gained a lot of momentum, and we are now ready to work as one unit. So therefore, this will be beneficial for the customers, especially. It will be largely beneficial for customers, for employees, for even for the shareholders too. So I think overall it will be a winner on all aspects. And though company to maintain 2 listed companies in a portfolio is also a bit of a challenge when you have corporate simplification as one of the main items on your agenda. We have been talking about corporate simplification, और इससे बेहतर corporate simplification, the signal for a corporate simplification can be the best example can be a listed company that you're actually folding up into the main company. We will continue the corporate simplification as we have spoken. We want to make it very simple, the corporate structure, and it's in line with whatever we've been talking about all these days. विश्वनाथ, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की ही बात मैं आपसे करना चाह रहा था। किस तरह के चेंजेस अब हो जाएंगे इस मर्जर के बाद, और जो रिजल्टेंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा? अगर आप वो अपने इन्वेस्टर्स को बता सकें, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से चेंज होगी? ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ ऑलसेक को we will be giving them the shares in Quess Corp, ये तो करीब 2% है। That won't make a big difference to the Quess shareholding or to the Quess shareholders, but it will make a big difference to the Allsec shareholders because the free float, the marketability of the shares, etc., will be a lot better. Corporate structure में from an operational perspective, there won't be much difference from what we are seeing today. The legal entity will not be there, but apart from that, the business still needs to be run. Customers need to be managed. Finances need to be accounted for. So there won't be much of a simplification as far as the operational part. But the ability for us to go to customers, cross-sell initiatives, all those will increase substantially over time. Digital initiatives that we have across the company, all those will gain a lot more momentum once Allsec comes into the Quess umbrella totally. करेक्ट। आपकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी जाहिर तौर पर और बढ़ जाएगी। कॉस्ट सिनर्जीज किस तरह से वर्कआउट होती दिख रही हैं? कॉस्ट सिनर्जीज के बारे में ये जो 2 साल की कोविड की जो एक्सपीरियंस हुई है, we have done a lot of cost simplification already in the last 2 years. So we are not paying that much importance to cost simplification as well. There will definitely be cost benefits arising out of this merger. I don't think it will be much. It will probably be about 1% of the total revenues and not more than that at this point of time. क्या टाइमलाइन तय किया है आपने इस मर्जर को कंप्लीट करने का? हमने सोचा है कि करीब 12 महीने तक हो जाना चाहिए, 12 से 15 महीने तक हो जाना चाहिए, but we are actually aiming for 12 months right now.
ओके, 12 से 14 महीने में ये पूरा होने की संभावना है। मैं कुछ बिजनेस की बात भी करना चाहूँगा। मिस्टर विश्वनाथ, आप हमारे साथ मौजूद हैं, इंडस्ट्री की बात भी करना ज़रूरी है। ये जो इमर्जिंग बिजनेस वर्टिकल है इस समय, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि जो डेटा हमारे सामने है, एक डेटा ये कहता है कि monster.com ने जो है वो करीब 3,000 से ज़्यादा नए ऑर्डर्स देखे हैं। क्यू जॉब्स ने जो है करीब 1.54 मिलियन नए यूज़र साइन अप किए हैं। ये जो इमर्जिंग बिजनेस का जो नया ये जो वर्टिकल है, ये किस तरह का परफॉर्मेंस अभी दे रहा है? इमर्जिंग बिजनेस को तो हम दो तरीके से देखना चाहिए। एक, द ग्रोथ इज इन लाइन विद व्हाट वी हैव प्लान्ड। वी हैड प्लान्ड टू एक्सपैंड द स्कोप, वी हैड प्लान्ड टू इंक्रीज आवर फुटप्रिंट in all these platforms. Monster is a white collar job platform, and Billion Careers is a blue collar. Like हमारे जो Q jobs, work and dash है, it's a blue gray collar platform. Both are very different. So from a business perspective, they're absolutely on track. Even the expenditure, we are actually planned to incur certain expenditure in the current year. Monster में जो fundraise हुई हमारी 100 crores of fundraise, 130 crores of fundraise that we did, was largely to take care of the immediate expenditures. The funding requirements of Monster. We have to spend money. And the fundraise largely happened to take care of costs on account of product development, sales, and marketing. These are the areas where we will be spending as far as Monster is concerned. So Monster, the current year, the burn, the cash burn in the current year, the 100 crores that we raised, will probably be used up in the current year, and we will turn and we will break even next year. That's the plan as far as Monster is concerned. Billion Careers, on the other hand, is again gaining a lot of momentum because the platform, the blue gray collar hiring platform, जो Q jobs है हमारी, I think it's a fantastic platform. The different recruiters who use the platform are extremely happy with the kind of results that they've been seeing on it. Our selection ratio is actually 1 out of 3 or 1 out of 4 for the positions that have been curated. So, which is very, very different compared to other platforms that are in the market today. So, therefore, I think, and there are other investors also who have shown a lot of interest to pick up equity in the blue gray collar platform company that we have, similar to what we have done with Monster. So that's the story as far as emerging business. On track. The market is really very receptive to what we have brought to the market. But this will burn a certain amount of cash in the current year. And we've been talking to all our investors and analysts about it for some time now, that this will be a cash burn business for this year. But next year will be a break-even business and will turn profitable after that completely. मैं आपसे इंडस्ट्री का भी एक आउटलुक लेना चाहूंगा मिस्टर विश्वनाथ। आप लीडर्स हैं यहाँ पर बिजनेस में। इस समय जो नई हायरिंग के ट्रेंड्स हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी अब ओपन अप हो रही है, हम देख रहे हैं वापस लोग ऑफिस जा रहे हैं, कामकाज शुरू हो गया है। क्या डिमांड धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है? कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से एरियाज हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा ग्रोथ और डिमांड देख रहे हैं? Good question. What are the sectors that we are seeing robust pickup in hiring? BFSI is being really leading the pack. BFSI is very good. We are having a lot of interesting conversations with the manufacturing sector, with the PLI schemes coming into effect and all of those. We are seeing a lot of interest in manufacturing sector. Construction mein we made some small entry last year into the construction sector. That is again gaining momentum, but we are still being very cautious. We are working only with the large players in the construction industry, given the kind of track record the industry has. We are seeing pickup of demand in the retail. We are seeing pickup of demand in telecom. So and even e-commerce. So all these sectors we have been watching. There has been a good level of hiring across all these sectors. IT ki bare mein to hum baat. No, it's all known that IT has been hiring a lot. And the challenge is that the number of people, my candidates are walking around with more than 2 or 3 offer letters. It's a question of convincing them to work with us. That's becoming a bigger challenge today. But otherwise, we are seeing a robust pickup in demand across all sectors. And at any given point of time, I think in the general staffing business, we have at least between 20 to 25,000 open positions that need to be filled up actually.
मीडिया का नाम आपने नहीं लिया मिस्टर विश्वनाथ। आई वुड अज्यूम कि मीडिया बिजनेस जो है वो शायद स्टैग्नेंट होता दिखाई दे रहा है इसके बाद भी, पेंडेमिक के बाद भी। चलिए, बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर विश्वनाथ, यहाँ पर क्वेस कॉर्प के टॉप मैनेजमेंट बता रहे थे जो मर्जर होने वाला है कंपनी का, उसके किस तरह के फ़ायदे हैं ऑलसेक टेक के साथ जो उनकी खुद की सब्सिडरी है, किस तरह के फ़ायदे होंगे। 12 से 14 महीने में ये मर्जर पूरा होने की उम्मीद है और सिंप्लीफिकेशन होगा यहाँ पर ऑपरेशंस में, ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि 2 लिस्टेड कंपनियाँ साथ में रखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उनको नहीं दिख रहा था। लेकिन अब क्वेस कॉर्प में आपको क्या करना चाहिए? मेरे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैनेजमेंट को आपने सुना, काफ़ी सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा उनका मानना है इस नए मर्जर के बाद। क्या कॉल देंगे इस समय क्वेस कॉर्प पर आप? तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। बुनियादी तर्क के आधार पर इस कंपनी पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है और अभी जिस तरीके से कारोबार को लेकर के सारी योजनाएं और जो जो अलग अलग वर्टिकल्स के बात की, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ई कॉमर्स हो, रिटेल हो, टेलीकॉम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण योगदान आ सकता है इस कंपनी का। और उसके कारण मेरे ख्याल से जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी सक्षम और मजबूत तरीके से आगे बढ़ सकती है। खाली एक ही है कि एग्जीक्यूशन रन रेट क्या है वो देखने की जरूरत है, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन होता है तभी जाकर के आमदनी बढ़ती है, मुनाफा बढ़ता है। तो बाजार का माहौल देखते हुए मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके शुरुआत करें, निवेश करने के लिए गिरावट पर और जोड़ सकता है लंबी अवधि के लिए। ओके, तो धीरे धीरे यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं बाजार का माहौल देखते हुए, और कुछ और गिरावट आए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया लंबी अवधि का होना चाहिए क्वेस कॉर्प पे। बहुत शुक्रिया गौरांग, समय निकाल कर आज वो व्यू देने के लिए। चलिए।